एडू स्टार्ट हबो ना सर ऊपर गले सर देखला ना ये नसला सर परसेंटेज रो टाइप टा बोलते पढ़ा हो ऊपर चले अच्छा सेटा पढ़ा हबो एगुडा सर देखला तो एटा सर येतला सर पेज नोट मुझे देखि देती एटा पढ़ा हबो परसेंटेज रो टाइप एट्रीब्यूट हां सर 190 एम सिला they declare a variable according to a collection of columns in a database table or view view जेमति हमें SQL जेमति हमें जानि थले view माने कोन पूरा टैग टेबल भितरु मु जेति की पोर्शन मते देखिबा पई मते अलाउ माने मु जदि मोर रिक्वायरमेंट अछि सेति की पोर्शन ही मु ताको देखि परिबी जेमति तमरो गोटे घर रो तम झरका हो तो घर बाहर मोर खुला पड़िया अछि बट जेति की झरकार जेति की शेप मु सेति की शेप अनुसार बाहर प्लेस गुडा को बाहर सर्कमस्टेंस गुडा को मु देखि पाउ दैट इज कॉल्ड द व्यू हला the prefix percentile row type with the database table or view fields in the record take their names and data types from the columns of the table or view the syntax is identifier reference row type देखो percentile row type attribute you learn that percentile type is used to declare a variable of the column type the variable has the same data type and size as the table columns the benefit of percentile type is that you do not have to change the variable if the column is alerted right also if the variable is a number and is used in any calculation you need not worry about its precision the percentile row type attribute is used to declare a record that can hold an entire row of table or view the field of the record take their names and data type from the columns of the table or view the record can also store an entire row of data fetched from the cursor or cursor variable. The slide shows the syntax to declaring a record in the syntax is identifier. Identifier means what? Is the name chosen of the record as a whole. Reference means is the name of the table, view, cursor or cursor variable on which the record is to be based. The table or view must exist for this reference to be valid. In the following example, a record is declared using personal row type as a data type specified, declare employee record, employees percentile row type, right? Percentile row type means what? कि तमे जेताले परसेंटेज टाइप रे तमे जेताले तमे कोनोसी वैल्यू जते तमे पास करछो इट मींस कोन परसेंटेज टाइप रे मोर ऑलरेडी एटा जदि अलर्ट जदि हेइथिबो ताले मु परसेंटेज टाइप को यूज कर परिबो परसेंटेज रो टाइप माने कोन मु पर्टिकुलर गोटे टेबल पर्टिकुलर एंटायर रो टा को मु रिट्रीव कर परि मोर रिक्वायरमेंट अनुसार राइट रो टाइप मींस जे तार ना रे ही तार मीनिंग अछि रो टाइप मींस रो टाइप गुडा को मु रिट्रीव करिया पई चाहिबी एज पर योर रिक्वायरमेंट बुझला जमते एडी देजी देखो the percentile row type attribute the employee record has the structure consisting of the following fields each representing a column in the employee table employee id dela first name dela last name dela tankor data type so mention kala right so taपर देछि to reference an individual field use dot notation right जदि मते रेफरेंस जदि यूज करिवार अछि इंडिविजुअल फील्ड को मते डॉट रोटेशन दबार अछि फॉर एग्जांपल जेमते रेकॉर्ड नेम राइट रेकॉर्ड नेम डॉट फील्ड नेम बुझला तो डॉट नोटेशन ता मते दबार अछि फॉर एग्जांपल the commission field in the employee record as follows employee record dot commission field right you can then assign a value to the record field that is 0.35 right जेतले मो एम्प्लॉय रेकॉर्ड ता कोन एम्प्लॉय रेकॉर्ड मोर होची सपोज मोर होची टेबल ता
the table name then मोर column name. तो टेबुल नेम टा कॉलम नेम मु केमति रिट्रीव करबी जेमति मोर टेबुल नेम डॉट कॉलम नेम इक्वल टू ता वैल्यू टा मु देली राइट जेमति तमरो मने थिबो तमे जदी सी सी प्लस प्लस की जावा तमरो लैंग्वेज जदी इ करथिबो धर क्लास मोर ऊपर डिक्लेयर कली क्लास भीतर मु पांचटा फंक्शन डिक्लेयर कर राइट क्लास रो बॉडी टाको मु एंड कर देली क्लास रो बॉडी बाहर मु मेन मेथड डिक्लेयर कर तो मेन मेथड भीतर मु क्लास रो गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी नाले मोर एग्जीक्यूशन टा कोड स्टार्ट हो मेन मेथड रू स्टार्ट हो कारण एंट्री पॉइंट मोर होची मेन मेथड एनी लैंग्वेज चाहे तुम सी नहीं जाओ सी प्लस एनी लैंग्वेज नहीं जाओ प्रत्येक लैंग्वेज रो एंट्री पॉइंट माने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो तुम मेन मेथड राइट तो मेन मेथड भीतर मते से फंक्शन गुडा कॉल करिया पड़िबो तो फंक्शन गुडा को जते कॉल करबी मन इच्छा तो कॉल कर परिबिनी मु कोन करबी गोटे क्लास रो गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी राइट से ऑब्जेक्ट थ्रू रो से फंक्शन गुडा को कॉल करी बुझला से ऑब्जेक्ट थ्रू रो से फंक्शन गुडा कॉल करी जेमिति धर तमे जो रूम रे बसछ भाबो तमे होचो एमडी राइट एबे तम रूम बाहर एम्प्लॉय गुडा काम करसंदी 100 एम्प्लॉय थिबे 200 एम्प्लॉय थिबे केते एम्प्लॉय थिबे काम करसंदी ताकर डेस्क रे काम करसंदी राइट एबे तो एटा तो संभव नुह जे एमडी को चैम्बर भितर सब धर 200 गोटे कंपनी रे अछंती 200 एम्प्लॉय को एमडी को चैम्बर भितर देबी जे सेठी काम कर पॉसिबल नुह राइट से माने तांको डेस्क रे से माने काम करंती एबे एमडी चाहूसंती जे मते 3 नंबर एम्प्लॉय जे बसची डेस्क से बसची तार कामटा मते दरकार तो एमडी को निजे जाई कि ताको डाकिबे से कोन करिवे से भाया फोन करिवे या फिर पियोनो को कहिबे राइट भाव से पियोनो आउ फोन होची तमरो होची ऑब्जेक्ट कहार कंपनी रो जे ऑब्जेक्ट थ्रू से फंक्शन गुडा को माने एम्प्लॉय गुडा को कॉल कराला एमडी को चैम्बर भीतर एमडी को चैम्बर होची भाव मेन मेथड राइट तो मेन मेथड रे सब एग्जीक्यूशन टा हुए डिटो सेम जिंस एठी एबे मोर कॉलम ना गुडा सब माने मोर मेंशन हे जाईची एबे जदी कॉलम ना भीतर जदि मु वैल्यू पास करिया पे चाहूची पर्टिकुलर कॉलम रे जदि वैल्यू पास करिया पे चाहूची तले मते कोन करिया पड़ो टेबल नेम माने एमडी डॉट कॉलम नेम इक्वल टू मोर वैल्यू बुझले assigning value to record you can assign a list of common values to a record by using the select or fetch it statement. Make sure that the column name appear in the same order as the field in your record. You can also assign one record to another if both have the same corresponding data type. A record of type employee, percentile row type, and user-defined record type having analogous field of the employees table. While you will have the same data type, therefore, if a user-defined record contains fields similar to the field of a percentile type record, you can assign that user-defined record to the percentile row type record. Right, Bujala? Creating a PLSQL record, for example, PLSQL can the record tomorrow create हुए देखो. Declare type पूरे type दला is record माने type रो नाटा दला is record right transaction t underscore res rec माने भाबो जे transaction बोली तो सेठी मोर variable declare कला कोन v salary sal माने variable salary variable minimum salary then variable head date then variable recall right तो एठी कोन कला बाकी समस्त ठीक अछि एठी हमरो सैलरी रो देला डाटा टाइप दला तार देला नंबर मिनिमम सैलरी रो नंबर देला बट डिफॉल्ट देला से 1000 राइट 1000 टू स्टार्ट हबो तमर हायर डेटा एम्प्लॉय डॉट हायर डेट परसेंटाइल टाइप देला एंड रिकॉल रे तमर एम्प्लॉयज परसेंटाइल रो टाइप टा से देला हला देन से कोन कला वी माई रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कला ता नाटा देला बिगिन तापर ता क्वेरीटा देला एठी राइट ता क्वेरीटा एठी देला तार सी डेट वगैरह करंट डेट वगैरह से एक्सेस करिवो देन सी कोन कला ताको रिट्रीव कला सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू वी माय रिकॉर्ड माने मोर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रो टाइप रो मोर नाटा डॉट वी रिकॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100 जहार एम्प्लॉय आईडी 100 थिबो तार रिकॉल टाको से कॉल करिकि तुमको शो करिवो राइट
तो যেତେବେଳେ ମୋ ଆଉଟପୁଟଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି ତଳେ ଦେଖ ମୋର ତାର ଆଉଟପୁଟଟା ଆସୁଛି କଣ 16 ଫେବୃଆରୀ 9 1500 ରାଇଟ୍ 16 ଫେବୃଆରୀ 2009 1500 ତାର ଆଉଟପୁଟଟା ମୋର ଆସୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିଲା creating a PLSQL record, for example, the field declaration used in defining a record are like variable declaration. Each field has a unique name and a specific data type. There are no predefined data type for PLSQL record as there are for scalar variable. Therefore, you must create the record type first and then declare and an identifier using data type, right? In the example, in the slide, a PLSQL record is created using the required two-step process. That is, a record type, transaction record is identified, and a record v underscore my record of the transaction type is declared. ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ଦିଟା ଟାଇପର ଗୋଟେ ହଉଛି ରେକର୍ଡ ଟାଇପର ନାଁଟା ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯାହାକୁ ତମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ଯୋଉ ଟାଇପରୁ ତମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ସେ ନାଁଟା ହଉଛି ମୋର ଭି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ମାଇ ରେକର୍ଡ ବୁଝିଲା ଧର ତମକୁ କାମଟା ତମେ ହଉଛ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା ତମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆସାଇନ୍ କରାଗଲା ଏଇଟା ହଉଛ ତମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆସାଇନ୍ କରାଗଲା ହେଲା ତମେ କଣ ନିଜେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ସବୁ କାମଟା କରିଦେବ କି ତମେ କାହା କଣ କରିବ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲ ତମେ ତାକୁ କହିଲ ତୁ ହାଫ ପାର୍ଟଟା ଧ ୟା ଫିର ତୁ କୋଡିଂ ପାର୍ଟଟା ତୁ ଦେ ତ ସିଏ ପିଲାଟା ଯାହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କର ତା ସିଏ ହଉଛି ଇଏ ବୁଝିଲା ଏବେ note देखो the record contain four field v salary v minimum salary v hire date recall v recall is defined using the percentile row type attribute which is similar to the percentile type attribute with percentile type a field inherits the data type of a specified column with percentile row type a field inherit the column names and data type of all columns in the reference table. In PLSQL, record field are referenced using the record dot field name, जोटा कि मोर आगुरु आमे करछि, right? Notation or the record dot field dot column notation for fields that are defined with the percentile row type attribute. You can add the not null constraint to any field declaration to prevent assigning null to that field. Remember that field that are declared as not null must be initialized. Not null ta tamara initialized haba darkar. बुझला कारण जदि तुम नल असाइन कर दो से रेकर्डटा तो तुम वेस्ट हो गला ना पूरा स्पेस तुम वेस्ट हो गला ना से नॉट नलटा मेंशन हवा दरकार ताकि मो फ्यूचर रे वैल्यू पास कर परिबी से बुझला advantage of using the percentile row type attribute the number and data type of the underlying database column need not be known and in fact might change at runtime. The percentile type attribute is useful when you want to retrieve a row with select statement, row label insert and update statement. এই কেসরে তোমার percentile row type র advantage টা মোর আসে বুঝলা The advantage of using the percentile row type attribute are listed in the slide. Use the percentile row type attribute when you are not sure about the structure of the underlying database table. The main advantage of using percentile row type is that it simplifies maintenance. Using percentile row type ensure that the data type of the variable declared with this attribute change dynamically when the underlying table is altered, right? Dynamically means runtime. If a DDL statement changes the column in a table, the PLSQL program unit is invalidated. When the program is recompiled, it automatically reflects the new table format.
The percentile row type attribute is particularly useful when you want to retrieve an entire row from a table. In the absence of this attribute, you would be forced to declare a variable for each of the column retrieved by the select statement. बुझला? ता absence तमे select statement use कर पारिबो. Another percentage row type attribute, for example, जेमते एट देखो declare v underscore employee number तार data type देला number, then employee record तार data type देला employees, then सेटे मोर percentage row type देला, right? Then begin select asterisk into मोर variable टा pass कला एठी form employees table रू मोर pass कला where employee id equal to v underscore employee number जहाँ थियो माने एटा 124 तमर आसी, right? 124 टा तमर एठी आसी, then check करी से कहबो, then से insert करिवो, insert into retired employee number, name, job, migration, hire date, leave date, salary, commission, department number, values तापर pass कला, right? एते बडो कोडिंग रे तमे एक्सिक्यूट कला परे तमरो ए सब गोटिए रो ही तमरो insert हो, बुझला? Another percentile type attribute example. Another example of the percentile row type attribute is shown in the slide. If the employee is retiring, information about the employees is added to a table that hold information about the retired employees. The user supplies the employee number. The record of the employee specified by the user is retrieved from the employees table and stored in the employee record variable, which is declared using the personal row type attribute. The create statement the create statement that record of the specified the user retrieved from the employees table and store the employee record variable, which is declared using the personal row type attribute. The create statement that create the retired employees table is create table name, then तार मोर कॉलम ना गुडा रहला वेरिएबल गुडा रहला जेमति तमरे टेबल क्रिएट करथलो. The record that is inserted into the retired employee table is shown in the slide. To see the output shown in the slide, place your cursor on the select statement at the bottom of the code example in SQL developer and press F9, right? F9 press कले से execute ही जला. Inserting a record by using the percentile row type, it is a declare करिथिबो आगुरु, right? Then तापरे मोर declare कला एटा, then select statement use कला, then तारो select statement रे where condition use करी कला, then insert कला मोर record टाको insert कला, बुझला? Then तापर ताको all total value जदि मते देखिबार अछि मो एठी select asterisk form table name मो use कर दे तो मते देखेला, बुझला? Inserting record by using percentage row type. Compare the insert statement in the previous slide with the insert statement in the slide. In this slide, the employee record is of the if type retired employees. The number of field in the record must be equal to the number of field names in the into clause. You can use this record to insert values into a table. This make the code more readable. For examine the select statement in the slide, you select hire date twice and insert the hire date value in the leave date field of retired employees. No employee retired on the hire date. The inserted record is shown in the slide. You can see how to update this in the next slide, right? केमि ताको अपडेट करबा जेमते एठी मोर लीव डेट रे मोर सेटा पड़ी जाईची, राइट? एठी मोर 16 नवंबर 99 अछि, हाई डेट रे भी 16 नवंबर 99 अछि एंड लीव डेट रे भी सेम जिंस पड़ी जाई 16 नवंबर 99. ताको केमति अपडेट करे सेटा नेक्स्ट स्लाइड रे अछि, हला? अपडेटिंग दा हमें मंडे पढ़िबा, हला? तारे जो प्रैक्टिकल कहथिले देबे बोली काली पठे दे, प्रैक्टिकल एग्जांपल काली पठे दे, हला? ओके, थैंक यू.